झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। Hallucinations हुए आपका? सबसे crazy hallucination क्या हुई? Crazy one, I think it was hallucination only. I think most of the people who heard the story think it was hallucination. I think it was something more than that. So it was Lhotse 2011 last camp. सबको पता है कैंप 3 से एवरेस्ट का रास्ता लेफ्ट साइड पे जाता है, लोत्से का रास्ता राइट साइड पे जाता है। कैंप 4 दोनों के अलग अलग लगते हैं। लोत्से फेज लाइक दिस लॉन्ग वॉल 5000 मीटर से शुरू होता है, 6100 मीटर से शुरू होती है, 86 कुछ तक जाती है लोत्से के समिट तक। वन स्टीप फेज लाइक दिस, ओके, बहुत लंबा है। उस पे सब लोग ऐसे चढ़ते हैं। कैंप 3 एवरेस्ट जाने के लिए भी यहीं से चढ़ते हुए जाते हैं। अब उस फेस में इट इज लाइक अ हॉर्स शू। एवरेस्ट ऐसे बढ़ता है, लोत्से ऐसे, नुब्से ऐसे। तो इस लाइक अ हॉर्स शू। इसी वैली में एक खुम्बू ग्लेशियर ऐसे नीचे आता है। तो इस तरफ जाने वाले लोग होते नहीं है कैंप 4 से लोत्से के, इस तरफ कोई नहीं जाता, सीधा ऊपर जाते हैं। एवरेस्ट के लोग नीचे से ही कैंप 4 लोत्से के इस तरफ चले जाते हैं। हम लोग आखिरी टीम थे लोत्से में 2011 में कैंप 4 पर बैठे हुए। कैंप 4 ऑफ लोत्से इज 7000 समथिंग मीटर्स, वेरी हाई। हम बैठे हुए वहां पे और रात को आवाज आती है, टिपिकल आवाज ऑफ somebody वो with those big mountaineering boots, नीचे क्रैम्पॉन लगाते हैं, तो जब स्नो क्रश होती है तब आवाज आती है, क्रश होती हुई स्नो की। तो ऐसे खस खस करके आवाज आई एंड इट केम फ्रॉम हमारे नीचे से टेंट से आए। अगर हम लोग ऐसे, ये पूरा अगर हॉर्स शू है ऐसे, एवरेस्ट यहाँ है, लोत्से यहाँ है, नुब्से है, ऐसे आया और इस तरफ चली गई वो रात को आवाज। तो मैंने बाहर ऐसे झांक के देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, है ना कोई फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। मैंने अपने शेरपा को उठा बोला, आपने सुना कोई क्लाइंबर आ रहा है? हाँ, मुझे कोई क्लाइंबर आया होगा। कोई भी नहीं था बाहर। सो I don't know what it was, but people were like, you are listening, but my Sherpa also heard the same sound. So we were thinking रात के 8 बज रहे थे, कोई क्लाइंब नहीं करता, सिर्फ we climb mostly during, अगर कोई क्लाइंब करता भी रात के 8 बजे तो ऊपर जा रहा होता या नीचे उतर रहा होता। ये कौन सा रूट था? तो I don't know whether it was hallucination or whether it was this. Second would be, I think, this one, Choyu. Definitely, I think I did hallucinate quite a lot before I fell down and looking up, and there were things which were going on. So I think I was hallucinating. First hallucination के बारे में थोड़ा आपको लगता है कि भूत था? भूत तो नहीं बुलाऊंगा। I don't know what it was. Sometimes, you know, humans have had a history of when having a passion and having a dream, जब उसको pursue करते हुए कई बार जब लोग चले जाते हैं, sometimes the energy tends to linger around, right? So I feel that it's not able to, sometimes the energy is not able to find peace. So we've had instances that suddenly a person who's never spoken Russian and is from, let's say, Australia, suddenly starts to speak Russian in like fluent manner, you know, at high altitude. You know, suddenly, you know, आप कह रहे हो कि माउंटेन पर ऑकल्ट चीजें होती हैं? Why not? Absolutely. और देखी आपने? I don't know. I have witnessed such things that I have never spoken up like this. क्या विटनेस किया? ऐसे ही बस people imitating other people and, you know, mix-ups happening, and I think it can also be a lot of, because I'm a psychology student also, so I do believe that there's a huge role of subconscious mind and the conscious mind which plays, and you're absorbing a lot of energies around you, and you're, even though we think we are not learning a language, but if you've been spending the last 2 weeks with the Russian, your subconscious mind is still registering all the information, right? So if that gets activated, you might be able to speak Russian also, though you've never spoken Russian ever in your life before. तो ऐसा होता है कई बार ह्यूमन माइंड के साथ। तो मुझे नहीं पता स्पिरिट है, एनर्जी है, क्या है, होता है, but they are just things which we've experienced sometimes. How things happen. वो second hallucination के बारे में बताइए। The Choyu one, no? The Choyu one was quite tricky. That's what, no, lucid. It was almost like lucid dreaming. There was a point when I went back, I was thinking that there was a point when I was in my body, then I was looking myself up, then again I was in my body, then I was again looking, then I was like fluid, then I was going somewhere. So I do sound like a crazy man sitting over here and you know, replying like this. But एक मिनट कॉन्टेक्स्ट ये है कि जितने भी माउंटेनियर्स शो पर आए, सारों ने कहा है कि उस ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हैलुसिनेशंस होती है, बहुत नॉर्मल चीज है। हाइपोक्सिया अभी तक असल में ना मेडिकल साइंस भी डिसाइफर नहीं कर पाई है। हाइपोक्सिक स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके दिमाग में? एग्जैक्टली क्या होता है, 40-50 साल से डॉक्टर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, हर इंसान पे अलग तरीके का रिएक्शन आता है। As soon as you start
lowering the amount of oxygen which is required for basic cognitive psychomotor processes, थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. मैंने बलजीत से भी यही सवाल पूछा कि ठीक है हेलुसिनेशंस होते हैं और हर किसी को अलग हेलुसिनेशंस होते हैं, पर वो हेलुसिनेशंस का सोर्स क्या है? क्या आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस वो हेलुसिनेशंस डिसाइड करते हैं? दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एज अ पॉडकास्टर लिटिल बिट आफ्टर टॉकिंग टू यू गाइस. फॉर एग्जांपल, बलजीत ने एक छोटी लड़की को देखा जो फ्लैग्स बेच रही थी, बिकॉज बलजीत क्लाइम्स विद दैट पेट्रियोटिक फील व्हिच आई एम श्योर यू डू एज वेल, पर दैट्स व्हाट शी सॉ अप देयर. आपने ये कहा कि आपको एक क्लाइंबर की आवाज सुनाई दी, एंड सेकंड आपको फिर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील हुआ जो आपको पहले उस 2012 की क्लाइंब में फील हुआ. अब बताइए इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. Nothing, it's a very different feeling. एकदम बीच में ऐसा आपको फील होता है कि you are like leaving your body and you're looking at yourself from a third person perspective. एकदम तीसरे इंसान की तरह आप देखना शुरू करते हो, फिर आप वापस आते हो, फिर आप दूसरी तरफ से जाके देख रहे होते हो अपना, फिर आप सामने से देख रहे होते हो, फिर आप पीछे देख रहे होते हो, but you're still walking. Like you're still in that body also, but you're looking at yourself from a third person perspective. I don't know what happens, how the shoots. I'm not. अगर if I was Buddha, I would be still in this body. But I'm sure कि मुझे अभी भी मेरी भी सफर अभी काफी लंबा है और बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी है. जब बलजीत आई थी तो उन्होंने खुद के हेलुसिनेशंस को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया और ये भी कहा कि शायद उन हेलुसिनेशंस की वजह से ही वो गुम गई थी माउंटेन में. आपने कभी ऐसा ये देखा है कि आपके कोई टीममेट बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट कर रहे हैं? I think that first let's come to oxygen less climbing of 8,000 meter mountains. Oxygen के बगैर 8,000 meter peaks चढ़ना बहुत ज़्यादा एक challenging काम होता है, and very few people do it, and there's a proper way to go about doing it, conditioning your body. तो उसमें धीरे धीरे करके करना चाहिए आपको अपना काम, because brain cells are the only cells in your body which never regenerate. So you will have kind of phantom memories. एक बारी वो सेल मर जाती है तो बॉडी को तो लगेगा कि उसकी डेड बॉडी तो उसकी कॉर्प्स तो वही है, तो उसको लगेगा कि सेल है वहाँ पे बट मेमोरी डेड हो चुकी है उसकी. समझो, योर न्यूरॉन्स स्टार्ट टू डाई एट हाई ऑल्टीट्यूड. So hallucinations are pretty vivid and pretty crazy, and they are very normal and will happen, but one needs to slowly, steadily gain altitude, and there's a way of climbing without oxygen. Now I have been trained by some of the pioneers of oxygen-less climbing, let's say starting from Hans from Austria, Ferran. These are all alpinists of the highest kind. They are the first from their countries to have ever climbed the 8,000 meter mountains without oxygen. So there's a step-by-step process. Now if you try to fast it up for various reasons or for whatever one has set their project ideas as, you are going to falter somewhere or the else. It's a slow, tedious way of going about climbing mountains without oxygen, and you cannot mess with it, because if you mess around without oxygen up there on high altitude, there is no coming back. There is no coming back. There's permanent damage to your body. So like today, I have been able to successfully do 15 8,000 meter expeditions over a span of 14 years is because I have always maximum time used oxygen. I have tried to push my limits as a teenager, but most senior mountaineers never allowed me to climb without oxygen because body was still developing. Now what has happened because of the popularization of mountaineering in India, there are a lot of good young talent like Baljeet, Keval, Priyanka, a lot of national awardee mountaineers who've done some incredible climbing. They're really inspiring, really motivating, they're upping the bar. But somewhere or the else, with climbing mountains, there's no shortcut to the top, especially for climbing without oxygen. You cannot be flying in and out of base camps. You cannot be like how till date I have always been coming from the school of thought where, though nowadays there are a lot of people who are doing speed ascents and doing multiple 8,000 meter peaks in one season, I like to give one mountain time. Because you have to fall in love with the mountain, trek up to it, slowly settle down, enjoy the mountain, do the hard work. What's the hurry? Where are we running to? That's the kind of school which I came from. That you start from the first village in the valley, and you walk, keep making friends all along the way, reach up slowly, village by village by village, you get acclimatized slowly, you spend enough time with the mountains, a relationship, पूरा एक relationship बन जाता है, then you go slowly, doing up, down. Nowadays everybody wants to go up, things are going to go. Nature does not know the difference between a big mistake or a small mistake or a poor person and a rich person. It will only see the logical one. Okay. Right. So
one needs to little bit slow down, I feel. Especially nowadays, youngsters are trying to run too fast. They're not realizing they're doing permanent damage to themselves, their bodies. The neurons. Their neurons especially, you know. इसकी कोई recovery नहीं होती. 8,000 meter climbing should be done by more seasoned mountaineers. Even I am still too young for it. Wow. I am still too young. 8,000 meter peaks were attempted by senior climbers. So trajectory was when you were 40, 45, when your lungs are fully developed, when your brain is fully developed. See, जो हमारी lung capacity 15, 16, 20 साल की उम्र में होती है, वो 40 साल की उम्र के इंसान से कम होती है. Bilaterals, आपके जो अंदर के जो हार्ट के एक्स्ट्रा मसल्स होती है, men also develop it after a certain age. So your cardiac arrest के chances कम हो जाते हैं after the age of 40. So there are certain developments which fully a human being only grows when you are at a certain age. When you're a teenager, when you're in your 20s, when your body is still, you know, completely taking its shape, when a tree is completely, उस time पे आप वो करोगे तो गड़बड़ होगा थोड़ा सा. So one must use oxygen, I would say, youngsters, and then do new routes, new ascents. You know, why don't open a new route on a mountain? Why take the same route on which everybody, all oxygen climbers, are also climbing and try to do without oxygen? What are you trying to do? दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में. सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए. हैप्पीनेस टू क्यूरियोसिटी.